मटेरियल का ब्रेकअप, किस चीज़ से कितने मार्क्स हैं। दूसरा टेक्स्ट बुक्स के नाम लिखते हैं, ठीक है। और सिलेबस जो है वो अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF फाइल मिल जाएगी, इसमें लेक्चर बाय लेक्चर सिलेबस लिखा हुआ है। ये सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, सब्जेक्ट टू चेंज, हो सकता है कि कुछ देर बाद हम इसमें से कुछ एडिशन कर दें या सब्ट्रैक्शन कर दें। सो ये आप जाकर देख सकते हैं। अभी इसमें से कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ज़्यादा चीज़ समझ नहीं आएगी, सो आप इसको आगे देख सकते हैं। इसके अलावा ये मटेरियल्स का जो टैब है, यहाँ पर अभी मैंने जो बुक्स हैं उनके लिंक्स दे दिए हैं, लेकिन प्राइमरीली इसको मैं यूज़ करूँगा होमवर्क असाइनमेंट्स अपलोड करने के लिए। अगर कोई मटेरियल मैं कहीं और से ले रहा हूँ, इंटरनेट से ले रहा हूँ या किसी और रिसोर्स से ले रहा हूँ, तो उस मटेरियल को भी मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा ताकि सारी क्लास को डाउनलोड कर सकूँ। अदर देन दैट, अगर मैं कोई क्लास वर्क लेके आता हूँ प्रिंटेड, तो यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में है, सॉल्यूशंस टू दिस एक्सेट्रा व्हाटएवर, वो आपको यहाँ पर। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये कॉन्टैक्ट। ये मेरा ईमेल है, इस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और दूसरा ये दो ग्रुप्स हैं, एक ये कोर्स ग्रुप है जो कि ईमेल ग्रुप है। तो जो मैंने अनाउंसमेंट्स आपको करनी होगी, फॉर एग्जांपल कि जी अगली असाइनमेंट अपलोड हो गई है या कि कल क्विज है या वगैरह वगैरह, वो इस गूगल ग्रुप में थ्रू है। इस गूगल ग्रुप को आपने ज्वाइन करना है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें, इस यहाँ पे, तो यू सी द ग्रुप एंड एक ग्रुप आपने जाके ज्वाइन करना है। उसके अलावा ये जो लास्ट ग्रुप है, ये एक फेसबुक ग्रुप है। यहाँ पर सारे सेक्शन के स्टूडेंट्स होंगे। यस। और यहाँ पे आप जाके डिस्कशन कर सकते हैं, या जो भी आपने कहना है वो आप यहाँ पर जाके लिख सकते हैं। और इस पर एसेंशली होपफुली ज़्यादातर डिस्कशन जो है वो पोस्ट रिलेटेड होगी और मटीरियल रिलेटेड होगी। तो डिस्कशन के लिए ये फेसबुक ग्रुप कर सकते हैं, और क्लास के अनाउंसमेंट्स के लिए जीमेल। सो क्लास लॉजिस्टिक्स पे इतना ही है, कुछ और आपने पूछना है इस बारे में तो आप पूछना। तो ये है कि जस्ट गो टू दिस वेबसाइट एंड जॉइन दिस ग्रुप्स। ये दोनों ग्रुप्स जो है, गूगल ग्रुप भी और फेसबुक ग्रुप भी, इसको आप ज्वाइन करें ताकि आसानी से कोर्स रन कर सकें। ओके, सो what I'm going to do is actually I'm going to just deliver the first class, and in this class there are many ways to introduce people to discrete mathematics. Obviously I'll introduce it in one way, and which I feel may be interesting to you, because I think all of you are programmers, all of you are computer scientists. So what I'm going to do is I'm going to sort of create a relevance between programming and discrete math. What I want to show is that you actually cannot do good programming without discrete math. Or I'll try to show that with a couple of interesting things, a couple of interesting facts, or I'll also try to keep it a bit simple but and interesting. So ऐसा है कि आप एक let's say कि आज से कई साल बाद, not कई साल, 3 साल बाद आप एक जगह जॉब कर रहे हैं और उसका नाम है प्राइम इनकॉर्पोरेटेड। वहाँ पे जितना भी काम होता है सारा काम प्राइम नंबर्स के बारे में। ओके, दे डोंट डू एनी अदर थिंग, जस्ट वर्क ऑन प्राइम नंबर्स। दुनिया में कोई प्रॉब्लम आती है, दे सेंड इट टू यू एंड यू राइट दैट प्रोग्राम। The first program they want you to write is a very very simple program which finds out whether a given number is prime or not. Can't be simpler than that. Right? So if a number is prime or not, the program आपको लिखना है. How many people can write this program? All of you, right? What is a prime number? Which is divisible by only by itself and 1. Right? If any number is divisible by anything greater than 1, let's say 2, 3, 4, up till itself, before itself, and जितने भी number है अगर उनमें से किसी कहीं पे भी उसका divisor है, तो that number is not prime. Okay?
So you want to write this program which detects whether a number is prime or not. Okay. So I'm going to start with a bit of code. Although this is a math class, I'll start with a bit of code. So you want to write this program. How can I write this program? I have let's say a function. You're familiar with that, right? So I have this function prime. Okay. Is prime. Okay. And it has this number n given as ये सब समझ आती है? And it returns a true value, true or false value. Sorry, true false. Okay. और क्या करना पड़ेगा इसको? इसको क्या देखना पड़ेगा कि प्राइम है या नहीं, क्या चेक करना पड़ेगा? अभी आपको मुझे बताएं। फिर लूप जो है 2 से स्टार्ट करें और लेस देन n तक चलाएं और देखें अगर डिवाइड होते हैं तो एक लूप चलेगी और 2 से चलेगी, ठीक है? और कहाँ तक जाएगी? n/2 लेस देन n तक जाएगी। n/2 एक मिनट पहले आइडिया दें, एक आइडिया, ठीक है? और i प्लस प्लस होगा, शायद इसको पहले ये चेक करना चाहिए कि अगर 2 है तो वो भी प्राइम है, तो 2 से डिवाइड होगी। कभी कभी मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा, उसमें कुछ चेक्स, शायद मैं सारे चेक्स वाले, तो आप देख सकते हैं कि ये चेक इसमें होना चाहिए। So if your number n is divisible by I, ऐसे ही होगा, अगर डिवाइड हो जाता है क्या मतलब है? प्राइम नहीं है, return false. Okay, I will not write the best code also. I always say that because actually the truth is I cannot write the best code. So anyway, चूंकि उसको नंबर मिलता है जिससे वो डिवाइड होता है, return false. और अगर वो हर जगह बच जाता है तो return true. यहाँ ये चेक कर लेना चाहिए कि अगर नंबर 2 ही था और 2 खुद से डिवाइड हो गया तो that doesn't mean कि it's not prime. 2 is prime. Because a prime number can be divisible, it can be divided by itself. Anyway, तो ये एक sort of program हो गया to find prime numbers. अग्री करते हैं आप? Okay, so obviously जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो as programmers या computer scientists हमारा एक्चुअल मकसद क्या होता है कि हमारे जो 2 resources हैं, 2 basic resources, so space और time, इन दोनों को हम preserve कर सकते हैं, ज़्यादा space भी ना हो और ज़्यादा time भी ना हो, right? इस केस में space तो कोई issue नहीं है, time issue है। अब जाहिर है कि ये प्रोग्राम है, आप लोग काफ़ी प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, आपको पता है कि लूप्स जितनी ज़्यादा इटरेशन करेंगी, जितना ज़्यादा वो काम, जितनी ज़्यादा बार चलेगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा इस प्रोग्राम में। तो रफली मैं कह सकता हूँ कि ये प्रोग्राम कितने स्टेप्स में है, ये लूप्स कितने स्टेप्स, n steps. So I have a solution now that takes n steps. How did I come to this solution? Somebody thought about it. Somebody said, you know, I think if I divide n number n, try to divide them by everything before n, then I think that if I find a divisor, then that will mean it's not a prime. After that, as soon as you think that, you don't have to do anything, because you know that's true. You know it's true. It's so obvious that's true, right? Right. Okay, but then somebody thought a little bit more about it and got it this way. You said that n तक जाने की जरूरत नहीं है, कहाँ तक जाए? n/2 यहाँ तक चले। इसकी क्या मतलब? अंडरस्टूड बात है, इससे ज़्यादा बड़ा वैल्यू से टाइम नहीं सकता। सही है। अंडरस्टूड इसलिए क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग। इतने इंटेलिजेंट है कि you do not even care about it. It's so understood, right? लेकिन let's break down this thinking. If you break down this thinking, then what really actually happened very fast in your brain is that you thought about it. You said, okay, well, I don't have to divide up till n. Maybe if I divide up till n by 2, that should work. So first you thought with a maybe. Maybe if I divide by n by 2, it should work. And then it was so obvious that automatically you said, okay, yes, it will work because why? Because if there is anything above n by 2, so 2 times that thing will be more than the thing I am dividing, right?
अगर n by 2 से ऊपर कोई चीज़ है अगर वो डिवाइड होता है तो ये फौरन आपके जहन में ये चीज़ आई इतनी फास्ट आई कि आपको पता नहीं चला एंड you found a new algorithm which takes how many steps? N by 2. N by 2. So why am I saying all these obvious things? Well, I'm just saying that you have to understand your own thought process. Your own thought process is not that fast, not as fast as you think. Maybe it's taking a few steps. Maybe you're thinking, okay, if I go till n by 2, then I do not need to check anything above n by 2 because anything above n by 2, if multiplied by 2, even by 2, will exceed the quantity s. Right? तो वो तो divisor हो नहीं सकता. Okay. We can improve it further. Okay. Does anybody know where we can? Square root of n. Actually, this will also work. This will also work. Why will it work? Less than or equal to that square root. Less than or equal to. Why will it work? So now your thought process has broken into two halves. Right? For the previous two cases, your thought process was taking two steps, but you didn't know. Right? The first step that you took was that maybe this will work, and then the second step, you immediately found out yes, of course, this will work. N by 2, maybe this will work, yes it will work. Right? Under root n, maybe this will work. But the step 2, that this will work, now you have to prove it. Right? Now you have to prove it. Do you agree with this? That you have to prove it? Because otherwise, अगर मैं आपने मुझे पहले देखा भी नहीं मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अब मैं आपसे कह रहा हूँ अंडर रूट n तक जाए और प्लानिंग हो जाएगा. आप इस बात को वैसे ही मान लेते हैं. बाहर जाकर किसी को कहते हैं भाई कहते तो मैं आते ही अंडर रूट n तक कहाँ से होगा? Right? So if you want to improve your program beyond a certain point, you will end up making claims, you will end up thinking about things which will not be obvious to you. समझ आएगा? So why does this work? Why does under root n work? Any ideas? Power. स्क्वायर रूट के बाद जो नंबर होंगे उसका सेकंड मल्टीपल पहले ही आ चुका होगा वो स्मॉलर नंबर होगा. स्क्वायर रूट के बाद जो नंबर आएंगे अगर 16 अगर हम चेक करेंगे और उसका स्क्वायर रूट 4 और 4 तो अगर उसके बाद 8 भी उसका मल्टीपल है लेकिन सेकंड मल्टीपल 2 होगा वो पहले ही आ चुका होगा. राइट. और इसकी वजह है कैसे जोड़ना. सो आपने एक केस देखा उस केस में आपकी बात हो सकती है. So what I'm going to do is obviously we're going to prove these sort of things. Okay. In fact, why not just talk about it quickly? I'll not talk about it very systematically because this whole class is about talking about it systematically. But let's talk about it quickly. Okay. So मैं आपको जल्दी से बता दूँ. वो ये है. Let's say you have a number n. Okay. If you have a number n, then there are two possibilities. The two possibilities is that either n is prime, in which case I will hit this. अगर n prime है तो I will hit this. Otherwise क्या n is not prime. If n is not prime, what does that mean? Huh? It is divisible by something. और इसी को मैं किसी और तरह से कह देता हूँ. If it is divisible by something, then obviously, if you take that thing and multiply it by something, you get n. So you're saying if you multiply two things, you get n. Okay, so then n is equal to 8. There are some, so let me write English. There exist integers, positive integers,
positive integers a and b such that n equals a to b. Okay? Otherwise I'll try it. So if a is greater than under root n and let me write this out, and b is greater than under root, then what can you say about n? So हमने ये कहा, आपने कहा कि n प्राइम नहीं है. अगर n प्राइम नहीं है तो ये ऑब्वियसली फॉलो करता है कि अगर n प्राइम नहीं है तो किसी चीज से डिविजिबल है. लेट्स से a से डिविजिबल, तो a को b से मल्टीप्लाई करता हूँ तो n आता है. उसके बाद मैं कहता हूँ ठीक है a और b दो चीजें मल्टीप्लाई करिए n आ जाता है. लेट्स से कि a भी अंडर रूट n से बड़ा है, b भी अंडर रूट n से बड़ा है. क्योंकि अगर a अंडर रूट n से छोटा है तो फिर तो ये लूप उसको फाइंड कर लेंगे. अगर a जो है वो अंडर रूट n से छोटा है तो दिस लूप विल फाइंड इट. क्या ये पॉसिबल है कि a भी अंडर रूट n से बड़ा है, b भी अंडर रूट n से बड़ा है? That is possible. Anyone wants to answer? No? What? आंसर ग्रेटर देन दोनों जो दोनों मल्टीप्लाई. सही है, बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं. अगर ये दोनों होंगे तो इसका मतलब होगा n is what? n which is equal to A and B. a into b. You're basically saying it is greater than under root n times under root n. ये बात है ना, अगर a भी greater than under root n है और b भी greater than under root n है तो n क्या है? n is greater than n? This does not make any sense. Does not make any sense. It means by if, from where I started, I made a mistake here. This assumption leads me to something which is false. Absurd, yeah, it contradicts something that I know that there is no number which is greater than itself. What does that even mean? If there is a number that is greater than itself, what does it mean? So it means that it is not possible that n, there is a prime, non-prime number n, जिसके सारे जो डिवाइजर्स हैं, कोई भी डिवाइजर देखो a to b, वो दोनों अंडर रूट n से बड़े हैं. इसका मतलब there has to be one which is, should I find it here? This loop should find it? Yes. Obviously this should find it. So what happened? It means that जब मैंने इस प्रोग्राम को शुरू किया था, उस वक्त पहला वर्जन जब मैंने लिखा, तो पहले वर्जन के अंदर मैंने एक क्लेम किया. उस क्लेम को let's give it a name. It's called like a conjecture. I made a conjecture. I made a conjecture that I think n को अगर मैं n तक सारे नंबर से डिवाइड करके देख लूँ, अगर वो किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नहीं है. It's such a simple conjecture. Its proof was very trivial, right? You didn't even perform that proof. You just thought about it, and you found that it's true. Then the second thing was, अच्छा नहीं n तक ना जाए, n/2 तक चले जाए. n/2 तक चले जाए तो वो भी एक कंजेक्चर था कि n/2 तक काम करेगा, लेकिन उसका एक प्रूफ था जो हमने किया है. वो प्रूफ ये था कि अगर कोई चीज़ है c which is greater than n/2, okay, I multiply that with 2 even, I get something greater than n, right? So anything which is greater than n/2, I multiply it by 2, 3, anything, I will get something greater than n/2. So I should not try things above n/2. वहाँ तक भी आपका कंजेक्चर था, आराम से प्रूव हो. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैंने सोचा नहीं अंडर रूट n तक चले जाए. मेरा कंजेक्चर ये है कि अंडर रूट n काफ़ी है. वो एक और बेहतर प्रोग्राम है. इस कंजेक्चर पे you have to pause and think of a proof. If you cannot do that proof, you cannot write this program. Right? So obviously this means that there are those programmers that can prove smart conjectures, and then those programmers who cannot prove smart conjectures. And to prove smart conjectures, you need discrete math. Okay? So that's one thing. It means that whenever I start thinking of algorithms, I think of ideas
But every idea starts from a conjecture. First I think about it, and then after that, after a while I give a proof, and then I can use it. Okay? अब एक और चीज़ है जिसका मैं सिर्फ आपसे एज अ क्वेश्चन मैं आपको पोज करूँगा, और उसके बाद I'll make a conjecture, but I'll not give you a proof. Okay? I'll make a conjecture and not give you a proof, and then I'll ask you to think about it. Okay? Think about that proof, या think about proving that my conjecture is wrong. दोनों चीज़ें हो सकती हैं ना, ये जरूरी नहीं है मैं हर बार कंजक्शन करूँ ट्रू, हो सकता है मैं कई बार कंजक्शन करूँ बिल्कुल गलत। तो आपको दोनों चीज़ें दिखाने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो वापस चले जाते हैं, कोई प्राइम इंक है और उन्होंने आपको दूसरा प्रोग्राम दिया है। तो दूसरा प्रोग्राम ये है कि भाई कोई भी नंबर अगर मैं तुम्हें देता हूँ, तुम मुझे कोई एक प्राइम नंबर दे दो जो उसको डिवाइड करे। मैं आपको एक नंबर n देता हूँ, आप मुझे कोई एक प्राइम नंबर बता रहे हैं जो n को डिवाइड करे। फॉर एग्जांपल अगर n 10 है, कैन यू थिंक ऑफ अ प्राइम नंबर व्हिच डिवाइड्स it? 2 divides it, 5 also divides it. Okay. What if the number is 16? Again 2 divides it. What if the number is 21? 3 divides it, 7 divides it. So okay, it seems like I can get a number, always a prime number that divides. So okay, so अगर आप एक प्रोग्राम लिखेंगे तो मेरे ख्याल है ये हो सकता है कि आप एक नंबर ले लें, आपको पता है कि उसके डिवाइजर यहाँ तक मिल रहे हैं, अंडर रूट n तक डिवाइजर्स मिल रहे हैं, हर डिवाइजर को लें और चेक करें कि वो डिवाइजर प्राइम तो नहीं है। ऐसे ही अगर वो प्राइम भी है और डिवाइजर भी है तो आप उसको रिटर्न करें। ऐसे ही मैं एक और प्रोग्राम लिखता हूँ और मैं कंजक्चर करूँगा कि वो प्रोग्राम काम करता है। एक प्रोग्राम लिखूंगा और मैं कंजक्चर करूँगा कि भाई ये प्रोग्राम काम करता है, ये एक ऐसा प्राइम नंबर रिटर्न करता है जो कि n को डिवाइड करता है। आई थिंक वो आपके लिए ऑब्वियस नहीं होगा, उस प्रोग्राम को देख के आपको लगेगा कि पता नहीं हो भी सकता है, इट्स अ कंजक्चर। I'll ask you to think about it. Okay, so let me write that program. So in fact, I can just slightly modify this program. Okay, and I can probably change its name. I can probably call it prime div. Okay, और program क्या है? Program is just this. Return. Okay. Otherwise, यहाँ पे अगर to return. That's it. Then let's go watch the here and just try to understand what it's doing. My conjecture is that this program always returns a prime number. Prime divisor. A prime number which divides n. Actually, I wanted to think about it and I wanted to try it. Try करने का ये हमेशा दुरुस्त है। n की कुछ वैल्यूज लेके ट्राई करें। एक्चुअली ये करके ना इसको देखते हैं, ये पहली बार ही जब डिवीजन होती है, पहली बार डिवीजन होती है वो रिटर्न करता है, ऐसे करता है। तो लेट्स से कि अगर n था 27, क्या रिटर्न होगा? 2 तो उसको डिवाइड नहीं करेगा, 3 रिटर्न हो जाएगा, 3 प्राइम, 3 प्राइम। अच्छा, और कोई नंबर ट्राई करें। If you can find a number, try to find a number. Take some time and try to find a number which will, fail the function. 15. 15 से क्या रिटर्न? 3 तो प्राइम है। 17 तो 17 ही रिटर्न हो जाएगा। हाँ, ये एक अच्छा बात है, अगर आप उसको प्राइम नंबर ही दे देते हैं तो वो खुद ही रिटर्न हो जाता है। तो प्राइम नंबर को तो और कुछ डिवाइड नहीं करता ना, प्राइम नंबर को तो और कुछ डिवाइड नहीं करता।
Actually, what if you end up finding a number? अगर आप एक ऐसा नंबर निकाल लेते हैं m जिस पे ये जो नंबर रिटर्न कर रहा है वो प्राइम नहीं है, तो you have just actually given a proof that this doesn't work. अगर एक भी चीज पे ये फेल होता है, तो this doesn't work, right? Because the program is supposed to work on the entire domain of its input. It has to work on everything. Anybody who can find this, I'll give them A grade. a Mercedes when I get it. So, any number? Any? तो आप क्यों कह रहे हैं? क्यों ऐसा कह रहे हैं? आप ये क्यों कह रहे हैं कि ऐसा कोई नंबर नहीं है सॉल्व कर सकते? क्यों कह रहे हैं? एक मिनट इन्होंने कहा कि आपका प्रोग्राम कभी मैं फेल नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कहते हैं कि ऐसा एक नंबर होगा। क्यों होगा? ऐसा नंबर नहीं है। हाँ नहीं, कोई आपने कहा ऐसा नंबर है जो कि इसको प्राइम है, जो इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको फील कर सके, क्योंकि ये प्राइम नंबर सबको डिवाइड कर देता है। हाँ, तो इन्होंने कहा कि प्राइम नंबर सबको डिवाइड कर देगा। 9.5 इंटीजर नहीं है, but not a float. हाँ, तो that's a good point. So I should say prime number तो ठीक है. So this is for integers, okay? N is an integer. क्वेश्चन है कि इन्होंने ये कहा कि आपका ये प्रोग्राम को फेल नहीं किया जा सकता क्योंकि एक प्राइम नंबर एग्जिस्ट करेगा जो कि n को डिवाइड करेगा। तो मैंने इसका आप ये क्यों कह रहे हैं? मतलब मैंने ट्राई करके देखा। So that's not, is that sufficient? उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? मैंने इस तरह के मैंने ट्राई करके नंबर्स ट्राई करके देखा है और हमेशा जब भी मैं किसी नंबर को ट्राई करता हूँ तो मुझे एक प्राइम नंबर मिल जाता है जो उस नंबर को डिवाइड करता है। So आपने किया है, आपने हो सकता है ये 2 बार किया हो, 3 दफा किया हो, 4 दफा किया हो। मैं कहता हूँ आपने ये मिलियन दफा किया। अगर आपने ये मिलियन दफा भी किया रोज उठ के आप ये करते हैं for some reason तो भी क्या ये प्रूफ है? मछली चाहिए। फिर ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस है। इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, नॉट अ मैटर ऑफ प्रूफ। आपने देखा है ऐसा होता है। एक और चीज भी है जिसे आप थोड़ा सा निगलेक्ट कर रहे हैं, वो ये कि पहली बार जब डिवाइड होता है तो ही रिटर्न कर देता है। ये चेक नहीं कर रहा कि ये प्राइम है या ये चेक कर रहा है क्या ये प्राइम है, या ये चेक कर रहा है क्या ये प्राइम है। मैंने इसको डिवाइड करना शुरू किया ना, 2 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, जो ही पहली डिवीजन हुई उसको मैंने रिटर्न कर दिया। आई हैव नॉट चेक्ड वेदर आई इज प्राइम और नॉट। सो आई एम अज्यूमिंग, I am conjecturing that the first thing that divides something will be a prime. सही है जी? ना सिर्फ ये कि there is a prime number that divides it, I am saying an even stronger thing. I am saying that the first thing that divides something has to be a prime. And do you see how efficient this is? Let's say कि आप ये ना करते, आप ये ना करते तो आप यहाँ पे एक और लूप लगाते, वो लूप चेक करता I प्राइम है कि नहीं, Yes. वो चेक करता और वो अंडर रूट n टाइम लेता, क्योंकि प्राइम चेक करने के लिए एक और लूप लगानी पड़ेगी जो अंडर रूट आई तक जाएगी। तो ओवरऑल वर्क जो है वो n के करीब चला रहा है, अंडर रूट n मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट n के करीब काम चला रहा है। लेकिन ये तो उतना ही काम ले रहा है जितना ये टोटल उतना ही काम लेगा, उतने स्टेप्स ले रहा है जितना कि ये डिटेक्ट करने में लगते हैं कि n प्राइम है कि नहीं। तो ये उतने टाइम में ये बता रहा है कि ये एक नंबर है जी जो कि n को डिवाइड करता है और ये प्राइम नंबर। So you cannot come up with a try. You should try a number which 0. Okay, I should have. Okay, n is a positive integer. n belongs to this set. Positive and n is greater than 2. N is greater than 1. Yes. That's a good thing. I should be more careful. But since I'm not a mathematician, I'm not careful. So
अगर ये चीज़ है, डिवाइड कर रहे हैं, पहली चीज़ मिली, उसको रिटर्न कर दिया कि जी एक प्राइम है, और आप लोग इतने अच्छे हैं, आप कोई काउंटर एग्जाम्पल भी नहीं निकाल रहे हो, आप कह रहे हैं ठीक है बंदा नहीं से आया है, सही कह रहा होगा नहीं? So like if I have this number 30 is divisible by 2, actually even numbers के लिए तो ये साफ नहीं होता था नजर। पहली चीज़ जो even numbers को डिवाइड करती है वो क्या है? 2 है, वो प्राइम। तो odd numbers के लिए ये इंटरेस्टिंग है। odd numbers के लिए मेरे पास नंबर 33 है, डिवाइड बाय 3, 35, 5 and 7. That's interesting. So a number is divisible by, so what I'm saying is the smallest number that divides it, just return that it has to be prime. But actually you see that it may not be the only prime. So 35 is divisible by 5 and 7. So yes, 5 is prime, but 7 is also prime. Right? तो ये मुमकिन है कि एक से ज़्यादा प्राइम नंबर जो है वो डिवाइड करें, लेकिन ये जो चीज़ है ये कह रही है कि जो छोटे से छोटा नंबर है उसको। So again I just want to make this point that you have a conjecture first and then you need to prove it, and if you cannot prove it you can't really use it. अगर next मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने ये प्रूफ पढ़ा हुआ है, मुझे पता ही है, मैं यूज़ कर सकता हूँ, आप अगर ये यूज़ करेंगे तो you will not be sure whether it works or not, whether it works or it doesn't. Okay. How many of you would want to see the proof of this? Okay, but okay, how many of you would want to find a number which fails this? Okay. Others don't really care about it. Okay. So yeah, so we have to do one of these things. We either want to find a number that fails it or a proof. Actually, in this case, a proof exists. 72. 72? 2 2 So it is divisible by 9. Yes. It will return 9. No, it will not return 9. return 2 Return 2. All even numbers will be caught by 2. पहली चीज़ ही जो आती है वो ये इतना एफिशिएंट प्रोग्राम है, वो ये आपका लगता है कि ये इंटरव्यू हो रहा था, आपने ये प्रोग्राम लिख दिया, आपका जो कंपैरेटर था उसने एक और लूप लगाई थी और पहले क्वेश्चन के बाद ही उसको भेज दिया उन्होंने, आप जॉब मिल गई। Anyway, I'm trying to motivate you. So this can result in dollars, is what I'm saying. Anyway. So right, so apparently it works on all things. So so that is a hard conjecture to prove. Difficult conjecture is that seems true. Just seems true. You try it with everything, it works. Try it with everything, it works. Again, try it, it works. But you can never be sure whether it will always work. Right? अगर एक conjecture है जो दूसरी तीसरी बार में पता चल रहा है कि यार ये तो ये फेल हो गया, तो कोई मसला नहीं है। तो एक क्लेवर कंजक्चर जो कि जिसको आप ये बता नहीं सकते कि यार ये वर्क हर बार करेगा कि नहीं करेगा, वो इस चीज़ को हमें प्रूफ करना चाहिए, राइट? अब इसका प्रूफ जो है, obviously I'm going to talk about a lot more proofs in the coming classes, but I'm just sort of giving you this. I want to draw a picture actually. I don't know if everybody will agree with this picture, but I like to make this picture, so I'll make this picture. Okay. So I want to make a picture with a man in it. Okay. So like let's say कि ये बंदा है, सारे हाँ, ये मुझे ऊपर करो नीचे वो मैं कर दूँ। ऑल टैप ऑल टैप साथ साथ ओ ऑल टैप ये magic. So basically, I just want this picture to be like in your minds. I want you to like burn it in your minds, or if you don't want to burn it in your minds, just make it on your paper, page. Which is that there is this computer scientist, CS guy, and
can write all these programs. Okay, these are the programs you can write now. What are these kind of programs? These are the programs with conjectures easy to prove or obvious. Just like saying n को प्राइम प्रूव करना है, n तक सारी चीजों से डिवाइड कर दो, n by 2 तक सारी चीजों से डिवाइड कर दो. ये सिंपल कंजेक्चर्स है और ये उसके बाद is this circle of programs, the algorithms with conjectures that are not obvious. And they require discrete math to prove. Right? So for example, the program where the loop goes till under root n lies in this upper bubble. And the program where you're just going to n by 2 lies here. This program, to find a prime divisor, lies here. It takes only under root n steps. The other program which checks for every number whether that I is prime or not, that lies here. Okay? So whether you want to do DM or not, it's just like deciding whether you want to stay in this bubble or you want to go. Right? So if you do not want to go here and write these programs which are new, more like smarter, which are more efficient, then you need DM. I just wanted to make that point with these two examples. For example, अगर आपने ये program लिखना है, you should be able to prove कि the smallest thing which divides a number is a prime. Actually, I like to do that because what I want is throughout this course हम ये काम करना चाहते हैं कि हम proofs देखेंगे, हम ये देखेंगे whether this thing is true or that thing is true or that thing is true. And as we do that, हम ये सब चीज़ों को record रखेंगे. For example, ये जो पहली चीज़ मैंने prove की थी, every number, positive number, has a divisor below under root n, below or equal to under root n. That was our result number 1. Because what I want you guys to do in this course is कि अपने पास एक notebook रखें and give a number to every result. Because I'll refer back to it. Remember result number 1, remember result number 2, result number 3. Right? So that was our result number 1. That every positive integer has a divisor up till under root n, below or equal to. Let's look at this one now. So इसको भी मैं कुछ ऐसे करूँगा. Again, I'm writing these proofs, I'm writing these arguments, and I'm not writing them very precisely. I'm writing them in English. So in this course, we will also learn how to really write them. Okay? Maybe not use English all the time. Okay? Maybe that will be a big miss. Okay. So let's see why this works. Let's see why this works. Okay. So let's say that n, so if n is prime, does this work? अगर n एक prime number है तो क्या होगा? रिटर्न है ना जगह. ये नहीं चलेगा. यहाँ तक आएगा ही नहीं. इस पर एक्चुअली ये डिवाइड नहीं कोई चीज़ करेगी. कुछ भी डिवाइड नहीं करेगा. यहाँ आएगा n रिटर्न कर देगा. फिर तो ठीक. तो if n is not prime, okay, then just write it down as such because मैं इन proofs पे वापस आऊँगा. इन्हीं proofs पे मैं वापस आऊँगा next time and I'll write them differently. अभी जो मैं लिख रहा हूँ अंग्रेजी में लिख रहा हूँ. Keep this with you. Okay. I'll return to these proofs and I'll say how to actually write it in a better way. So let's say that n is not prime. Then there exists a positive number a. This is a set of positive integers such that a is the smallest number
divides n. Okay, in fact ये जो line है a is the smallest number that divides n. I can write it like a divides n. So this is the symbol I will use for divide. A divides n, and a is the smallest such number. Okay, so this is this possible to pick a number which divides n and is the smallest such number? Obviously, I can just go through integers. 2 से डिवाइड करता हूँ, 3 से डिवाइड करता हूँ, 4 से डिवाइड करता हूँ, और मैं उस नंबर को पिक कर लेता हूँ जो पहला ऐसा नंबर है जो इनको डिवाइड करता है. ओके, सो a is such a number. और ये प्रोग्राम क्या अज्यूम कर, ये नंबर a रिटर्न कर रहा, राइट? लेट मी आस्क समवन, a रिटर्न कर रहा, पहला ऐसा नंबर रिटर्न कर रहा है ना, तो क्या इनपुट देगा, और ये क्या अज्यूम कर रहा है, ये बात क्यों प्राइम होगा, क्यों प्राइम होगा, स्मॉलेस्ट है लेकिन उसके साथ साथ प्राइम भी है. तो ये जो मैंने ए नंबर पिक किया है इसको प्राइम होना चाहिए. फॉर दिस प्रोग्राम टू बी ट्रू, for this program to be true, a should be prime because it's the smallest या first thing that divides n. So obviously अगर ये prime नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी जो मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें मैं smallest चीज़ पहले ऐसी चीज़ उठा लेता हूँ जो कि डिवाइड करती है, वो जो smallest चीज़ है वो भी हो सकता है प्राइम हो. Okay, so a is the smallest such number that divides n. So अगर a prime नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं? Let me start like this. If a is not prime, मैं यहाँ इस assumption से शुरू करता हूँ. If a is not prime, if a is not prime, इसका क्या मतलब है? जब n को मैंने कहा था कि if n is not prime तो it is divisible by something called a. If a is not prime, what does that mean? If a is not prime, what does that mean? किसी और से पूछो. इसका सिंपल सा मतलब क्या है? जब कोई नंबर प्राइम नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है? It is also divisible by something. It is also. So इसका मतलब है then there exists another integer b, and b divides a. ये बात है. अगर a प्राइम नहीं है, आपने कहा कि ये सबसे छोटी चीज है जो कि n को डिवाइड करती है. और उसके बाद आपने कहा कि भाई ये जो b है उसको आपने कहा कि अच्छा a जो है वो प्राइम है. मैंने कहा नहीं प्राइम नहीं है. तो अगर प्राइम नहीं है तो इसका मतलब है कि एक और नंबर होना चाहिए जो a को भी डिवाइड करे. सही? ये जो और नंबर a को डिवाइड करे b, ये a से बड़ा या छोटा? छोटा. बड़ी चीज तो नहीं कर सकते. So this means then b is less than a. B is less than a. A divides n and b divides a. b divides a. This means then b divides n and b is smaller than a. What does that mean? So, but I already know that a is the smallest number. What happened? That is absurd. हाँ, तो basically हुआ ये कि मैं एक assumption के साथ चला which is true. किस तरह true? Because मुझे पता है कि I can always pick a number which divides n, और वो number सबसे छोटा सा number है a. और उसके बाद आपने कहा जी ये प्राइम है, लेकिन आपने कहा नहीं हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आपको हमने कभी उसी में देखा तो आपने कहा कि ये तो बात गलत है. तो ये बताइए कि आपने कहा नहीं प्राइम नहीं है,
तो मैंने कहा ठीक है यार प्राइम ए प्राइम नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि एक नंबर बी है जो ए को भी डिवाइड करे, तो वो नंबर तो ए से भी छोटा है, तो मैं बजाय ए को पिक करने के वो नंबर पिक कर लेता हूँ। It means कि मैंने जो assumption लिया A is not prime, it leads me to something which contradicts with something that's true, because I picked a number which was the smallest number. So there has to be the smallest number has to be prime. Otherwise, there is a smaller number which even divides it, and that will be the number I'll pick. And then you say नहीं अच्छा ठीक है वो आपने pick किया ना B वो भी prime नहीं है, मैं कहता हूँ B से भी नीचे एक C है, वो B को prime कर दो, B को divide कर दो, ठीक है, तो वो मैं पिक कर लेता हूँ, आके नहीं C भी प्राइम नहीं, फिर मैं कहता हूँ यार C प्राइम नहीं है, ठीक है, तो C को एक नंबर डिवाइड करता है D, वो उससे भी छोटा है, और हम यही बात करते रहते हैं शाम को। So whenever you make this assumption that a number which smallest number which divides n is not prime, it leads you to a contradiction that it is actually that the number which I'm saying is the smallest is not the smallest. So that after this argumentation I can be sure that yes, the first thing that I will return is a prime. So what has happened is that I have gone from this conjecture to a proof, meaning an argument which established कि हाँ वाकई ये काम करेगा। Any questions so far? Why every DM is obsessed with prime numbers? So the question is that why is every discrete math person, a teacher, obsessed with prime numbers? So the answer to that is